Hello everyone, today I'm going to show you how to install Windows 10 on your laptop and PC, and I'll be speaking both Hindi and English so that it could be understood globally to all viewers and also to my countrymen. So I'll be speaking in Hindi too. मैं हिंदी में भी बताऊंगा ताकि आप लोग भी समझ सको एंड इंग्लिश में इसलिए ताकि ग्लोबली सारे व्यूअर्स भी देख सकें इस वीडियो को. So I've been installing Windows 10 with MS Office. MS Office के साथ में आपको क्रैक Windows 10 मिलेगी. So let's get started. We need a Windows 10 first. So we are going to download it from Google. You can just simply write Windows 10, get into PC, and here in the first section you can see get into PC operating systems. You can download the first one because Office is included in it. आप चाहो तो Windows 10 का फर्स्ट ऑप्शन ही डाउनलोड कर सकते हो. 2019 ऑफिस इंक्लूडेड है इसमें Windows 10 के. We will scroll down. You can see screenshots. आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं and you will find the download button here. So we'll tap on the download button. It's saying your request resource will be granted from the server. इसका मतलब है कि हमको वेट करना पड़ेगा and it will surely give us the download. Yes, इसने डाउनलोड कर दिया है. Start and we can see that it's downloading. Now it's downloading the ISO file. Make sure that we will always get an ISO file here in the end or .img file because we need to mount it on the pendrive. ये हमेशा ध्यान में रखिए कि एंड में ISO फाइल लिखा हो या फिर ISO image.img करके भी हो सकता है. So it will be downloading this 5GB file, but since I have already downloaded it, you can just download it by the time. And we will start further with it by cancelling this download. I will provide the link in the description. Even if you want it, I will just send this link into the description. My link description में फिर भी provide करा दूँगा. And let's move on. So now we need a pen drive. I'm going to insert my pen drive in it. So हम एक pen drive insert करेंगे and continue without scanning. हम इसको फॉर्मेट कर लेंगे ताकि हम इस पे माउंट कर सकें. Just to make sure we are going to format it. Now that format is complete, we need a small program. हमको चाहिए एक small program, Rufus, or any imaging software that could mount it on Pendrive. So you can just write Rufus download and you can just go into the first website. हम just पहले ही वेबसाइट पे जाएंगे और ये एक छोटा सा प्रोग्राम डाउनलोड कर लेंगे क्योंकि हमको एक प्रोग्राम चाहिए जो कि पेन ड्राइव पे माउंट कर सके. Just click yes and we are ready. और ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि हमारी 8GB की पेन ड्राइव है या फिर आपकी जो भी पेन ड्राइव होगी. रिमेंबर कि मिनिमम हमें चाहिए 8GB क्योंकि 5GB की तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही होगा. अदरवाइज इट विल नॉट बी डिटेक्टेड इन पेन ड्राइव सिस्टम. सो वी आर गोइंग टू गो ऑन डेस्कटॉप. If we select the ISO image, अब जब हमने ISO सेलेक्ट कर ली है डेस्कटॉप पे आकर के, इसके थ्रू हम डेस्कटॉप पे गए एंड वी जस्ट टैप्ड ऑन द फोल्डर लाइक दिस. अब इसमें स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन चाहिए. UEFI पार्टीशन स्कीम हम MBR करेंगे क्योंकि आजकल के सारे जो भी डेस्कटॉप है वो MBR स्कीम पर ही चल रहे हैं, पार्टीशन स्कीम पर. बट मेक श्योर कि अगर आपका 5-6 साल पुराना लैपटॉप है और MBR स्कीम से विंडोज़ नहीं चलती है, आपकी पेन ड्राइव एंटर करते ही वो क्रैश हो जाता है या कुछ होता है, तो इसका मतलब है कि आपको उसकी स्कीम जो है वो GPT पे करनी पड़ेगी क्योंकि ओल्डर सिस्टम GPT भी चलते थे.
but we are going to keep it MBF for the time because this is the default partition scheme. Now we will keep everything as it is. It is going to be NTFS ESD ISO volume level हो जाएगा. We can change it to Windows 10 also if you want. We will just started, there is nothing to change. Okay, everything on that Windows pen drive will be removed. इसमें से सारा कुछ फॉर्मेट हो जाएगा. So now that ISO has been successfully mounted on pen drive, ISO successfully mount हो चुका है pen drive पे. Just to make sure that it has been mounted, we'll see to it. एक बार देख लेते हैं सक्सेसफुली माउंट हो चुका है कि नहीं. तो ये देखिए, ये पेन ड्राइव है और ये इसके अंदर सारी की सारी फाइल्स माउंट हो चुकी है. और ये अब बायोस सिस्टम के थ्रू रीड की जाएगी, जिसके थ्रू हम इंस्टॉलेशन करेंगे. दिस विल बी रेड बाय बायोस सिस्टम बाय विच वी कैन इंस्टॉल इट. सो नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. चलो चलते हैं एक्शन में. आई एम गोइंग टू रिमूव द पेन ड्राइव एंड लेट्स गेट टू वर्क. So let's get started. We are going to firstly install pen drive in it. So this is the pen drive that I have mounted Windows OS on. इसमें Windows OS डाल दिया है मैंने. So we are going to just go into our dummy laptop and we are going to just put in the USB slot right here in it. Now it's ready to install operating system, and now I am going to focus it on this screen. Remember that every device has its own key to go into the boot menu. हमेशा याद रखिए कि हर एक डिवाइस का अपना बूट मेन्यू में जाने के लिए अलग एक की होती है. एसएस की जैसे कि एस्केप की है, एंड HP has a different boot menu key and Acer has different boot menu key. Just like that, Asus has escape key. So in order to go into the boot menu, we will tap escape key just after we will tap on power button. तो हम power button दबाते हैं. Now that it is booting, I will be tapping escape key. Now you can see that booting options have arrived. बूटिंग ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट फिनिक्स ओएस दिख रहा है. इसका मतलब है कि इसमें दो डुअल बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम डाले गए ऑलरेडी मैंने. एक फिनिक्स ओएस है और एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है. दैट्स व्हाई दिस शोइंग विंडोज़ बूट मैनेजर. देन वी हैव HP pen drive, you can see here, but firstly we will need to check if there isn't any secure boot enabled. हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि कोई सिक्योर बूट एनेबल्ड तो नहीं है, क्योंकि एक नए लैपटॉप में सिक्योर बूट एनेबल्ड होता है. उसके लिए हम जाएंगे बायोस सेटिंग्स पे. Here you can see many options. Let me bring it closer a little bit. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेन दिख रहा है, फिर एडवांस्ड है, then this is boot and this is security. We will go to security and there you can see the secure boot menu option. We will click enter and here we are at secure boot control. It is disabled, so you have to disable secure boot, because अगर secure boot enabled है तो it will not allow to install another operating system on it. So we will save changes and exit. Now we will again press escape key here. Now we are back at it. अब हम इंस्टॉल करेंगे पेन ड्राइव. Just to make sure, let me just fix my camera first. Okay. Now we can start. Let us enter into HP pen drive. Now it will take some time and it will open us
whatever installed in HP Pendrive. हम देखेंगे अभी कि HP Pendrive में क्या इंस्टॉल है. Now as you can see, we have arrived at installation setup. English, time and currency format, we will just keep US for now. I don't want to change anything just for installation. We'll tap on install now. Setup is starting. I will just fast forward a bit just so that you can see whatever it is going to be. I don't have a product key. You will always tap on I don't have a product key. हम हमेशा I don't have a product key पर ही दबाएंगे. It won't be asking for it. Upgrade, install Windows, keep file settings and applications, custom install. You can go with this option also, but I'm going to go with custom install and I will show you how it is done. मैं custom install के साथ चलता हूँ क्योंकि I want to just show you how it is done. तो इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे partitions है. So this is C drive and you can see that this is D drive. हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है वो C ड्राइव में होता है. So you can see that this is I guess C drive क्योंकि smaller drive और D drive मैंने I know that D drive has bigger partitions, so we are going to go with this. Now you can choose to just don't go for next, because if I will go for next it will just, so you can see what it is saying here. If the partition you have chosen contains files from previous Windows installation, these installation folders and files will be moved to a folder named windows.old. तो ये बोल रहा है कि अगर आपके पास पिछली विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जितने फाइल्स है वो इस windows.old फोल्डर में चले जाएगी. एंड अगर आप इसको ओके दबाते हैं और आगे चलते हैं तो ये पहले ये इंस्टॉल करेगी और जो भी प्रीवियस फाइल्स है वो सारी आपको इसमें मिल जाएगी. आपको डाटा लॉस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. बट अगर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो अगर आपको सारी फाइल्स क्लीन करनी है, आपको पूरा सिस्टम क्लीन करके आपको नया का नया चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्मेट दबा सकते हैं और उसके बाद आप नेक्स्ट दबा सकते हैं. तो आपका पूरा क्लीन विंडोज़ इंस्टॉल होगी, प्रीवियस फाइल्स भी उड़ जाएंगी. So we will tap on next and we will go further, and you just have to tap next and this will be installed on your computer. That's what I'm going to keep it here only because I just don't want to install this further. There is some important data on this computer, so I won't be going further with this, but you can just tap on next and we'll start installing files. That's all for installation. Now, when you have installed Windows on your computer, जब आपने Windows इंस्टॉल कर ली होगी, there are some things that will still be needed. कुछ चीज़ें फिर भी बची हुई है, जैसे कि आपकी जो ये कीज़ है, जैसे कि वॉल्यूम, पावर एंड दिस ब्राइटनेस कीज़, this won't be working because you don't have drivers installed, Intel or AMD drivers that drives these components. आपके विंडोज़ में फिर भी ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होंगे क्योंकि जो भी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खाली इसमें विंडोज़ इंस्टॉल करता है, ड्राइवर्स नहीं, क्योंकि हर आजकल लैपटॉप्स में AMD और इंटेल के डिफरेंट प्रोसेसर है, तो you can't be specific about which drivers you have to install unless knowing the processor type. तो अब जब आपकी ये कीज़ काम नहीं कर रही होंगी, आप एक बार चेक कर सकते हैं फिर भी फंक्शन की और ब्राइटनेस अप डाउन करके, जैसे कि आपके लैपटॉप्स में होंगी. अगर आपकी ये कीज़ नहीं चल रही होंगी तो आई विल शो यू हाउ टू डू इट, हाउ टू इंस्टॉल ड्राइवर्स. यू विल जस्ट हैव टू टाइप, if you have Intel motherboard, Intel processor, then you will just type on Intel drivers download.
इट विल टेक यू टू इंटेल साइट। ये आपको इंटेल साइट पर ले जाएगा जहाँ पर आप डाउनलोड इंटेल ड्राइवर्स दबा सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर AMD ड्राइवर्स। अगर आपके प्रोसेसर AMD ड्राइवर्स का है, AMD processors in your laptop, you can just tap on AMD drivers support. Now you can see that it will auto detect, install and updates for Radeon graphics Ryzen chipset drivers for Windows. We'll just install it, or if you have Intel, then you can just go with this. You can download Intel driver support assistant. तो भाई अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो किसी तरीके से हेल्प करती है तो सब्सक्राइब नहीं करना तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट एक लाइक कर दीजिए अगर आपकी ज़रा सी भी हेल्प होती है।